Hey guys, welcome to Unacademy OPSC channel and good morning to all. So in today's session, we'll be discussing one of the important areas in Indian polity, that is emergency provisions. So we'll see important questions in this session for OPSC and other government exams. So before we start, let's have a glance or look over Unacademy. As you know, Unacademy is the largest learning platform in India. If you are preparing for any government exams, then Unacademy is no doubt the one-stop solution for you. Sitting at your own place, own home, own residence, own place, you can watch live classes from top educators. You can watch live classes, all the classes at your own convenient time, own place, own time. Live classes are, you find very interesting, and every component is there in your live class. You can ask the questions to the educators, you can write your feedbacks, you can have the doubt clearing sessions, you can get the PDF notes, each and everything is there. Okay, so that to facilitate learning and prepare you for this exam, to make you prepare for this exam, we have added each and everything, all the features in our course and delivery, and this platform will find each and everything that you require. So what is Unacademy and why should you join Unacademy? That is the question. Unacademy आपण मानक पाई सब गवर्नमेंट एग्जाम पाई कोर्सेस प्रिपेयर करूची, कोर्सेस लॉन्च करूची. तो Unacademy OPSC जदि आपण जॉइन करूचंती, ओडिशा गवर्नमेंट थिबा जे कोनोसी एग्जाम पे आपण प्रिपेयर करि परिबे, घरे बसी कि जॉब करिकि कॉलेज रे भी पाठ पढिकि, काहे कि ना आपण निज टाइम रे क्लास देखि परिबे. क्वेश्चन होची जदि लाइव क्लास गोटे टाइम रे चलीछि, आपण सेही समय कॉलेज रे अछंती बे जॉब करूचंती, आपण लाइव क्लास देखि न पारंती, बट यू कैन वॉच दैट रिकॉर्डिंग्स. ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. सो लाइव क्लास, सब लाइव क्लास हम रिकॉर्ड हे करूची, आपण रिकॉर्डिंग देखि परिबे, लाइव क्लास भी देखि परिबे, निज कन्वीनियंट टाइम रे आप देखि परिबे. आ गोटे बड़ा कथा होची कोर्स फी, सब्सक्रिप्शन फी इज वेरी वेरी नॉमिनल. गोटे 1 मंथ स्कूल ट्यूशन फी 1 मंथ टू बिकम इट 2 इयर्स पय आपण पाउचंती. 2 वर्ष रो कोर्स आपण 5-6-7 हजार, इनफैक्ट 7000 रे 2 वर्ष रो कोर्स पाउचंती. तो या टू चीप इन टर्म्स ऑफ प्राइस, या टू लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म आपन को एते कवरेज दे के एते कोर्स दे दोथवा प्लेटफॉर्म कोनसी नाही. आपन वाइड कवरेज कोर्स पाइबे, सब प्रकार लेसन्स देखि परिबे, समस्त क्लास आपन अटेंड करि परिबे ओनली वन सब्सक्रिप्शन रे. तेणु आपन जदि Unacademy आज ही जॉइन करंतु, Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड करंतु, करिक आज ही जॉइन करंतु. सो व्हाट यू विल गेट यूज माय रेफरल कोड टू गेट 10% डिस्काउंट. तो हमर आउट कोन रहिछि, हम देखो बहुत सारा कोर्स लॉन्च होची. प्रगति रे आपण देखिबे 15 अप्रैल स्टार्ट हेछि, आपण सब्सक्राइब करि परबे कोर्स पई. प्रगति रे कोन कंप्लीट बैच कोर्स होची एसओ हाई कोर्ट पई. आपण 13 अप्रैल हम स्टार्ट हेछि फाउंडेशन कोर्स ओएस प्रीलिम्स एंड मेंस रो बैच स्टार्ट हेछि, आपण एथि भी एनरोल करि परबे. तो आपण देखो गरुड़ कॉम्प्रिहेंसिव बैच रोची सीपीएससी पई, जोटा के एसआई एग्जाम 37 अप्रैल स्टार्ट हेछि, एथि भी आपण एनरोल करि परबे. ये सब होची बैच कोर्सेस लॉन्च होची Unacademy रे. तो आपण बहुत बेनिफिट ऑब्टेन करि परिबे जदि Unacademy रे वंस यू आर सब्सक्राइबर. सेति पई Unacademy रे आपण गोटे सब्सक्रिप्शन आ पड़िबो, एंड सब्सक्रिप्शन फी इज वेरी वेरी लो. सो नो सो आउ कोन रहिछि. तो देखो बैच कोर्स सब चली, साइंस बीएड बैच, साइंस बैच चली. ओके, तापर हमर चली गुड मॉर्निंग रघुनाथ. फाउंडेशन कोर्स चली, फाउंडेशन कोर्स गोइंग ऑन. ऑप्शनल कोर्स चली 25 फरवरी स्टार्ट हेछि. तो मेंस पई ओपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सीरीज भी रहउछि Unacademy रे. तापर आपनकर मैराथन रहउछि बैच, बीएड बैच, आर्ट्स रहउछि बैच, साइंस बैच, एस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज रही. देखो एस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज एथि आपण जॉइन कर परबे. टेस्ट टाइम रही 5 PM. सो फ्री प्लस कोर्स भीतर आप जानते फ्री रे आप लिमिटेड सिलेबस पाइबे. ये कंप्लीट कवर कर परिबे सिलेबस. फ्री कोटा स्पेशल क्लास जोटा आप फ्री रे देखि परिबे.
फास्ट आप अनएकाडेमी आप डाउनलोड करूँ तापर आप फ्री क्लास ओपीएससी कोड सेट करके फ्री क्लास देखो प्लस आप अनलिमिटेड सिलेबस कवर करेंगे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स पाइबे अनलिमिटेड पीडीएफ्स रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहा टॉप एजुकेटर मान सो एनरोल नाउ इन दिस कोर्स ओपीएससी प्लान देखो 24 मंथ्स को केते अछि 7560 वेरी 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 लो प्राइस हला आपण आहुरी भी जिते फ्री क्लास देखिए से कॉइन पाइबे ताको भी रिडीम करके आहुरी 10% पर्यंत आपण ऑफ पाई परिबे तो प्लस फीचर्स लाइक आप घरे बस क्लास देखिपारे टॉप एजुकेटर मान एक कंप्लीट एग्जाम प्रिपेयर करेंगे वीकली फ्री टेस्ट पाइबे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रही फ्री टेस्ट सीरीज एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मेनी अदर फीचर्स more additional features on Unacademy. This is your Unacademy. Do subscribe now. Description box में link दिया जाए everything is given. Just follow that link. Click on that link and get subscription today itself. So let's get started our topic emergency provisions. Emergency provisions कौन रोचे emergency provisions आप लोगों ने जानते हैं we have three types of emergency. गोटा होची national को लेखा comment section जो मैंने participate करूँ we have three types. How many types of emergency are there? How many types of emergency are there? Three. What is national emergency? What is state emergency? What is president rule कहते? What is financial emergency? So we have three types of emergency. National emergency को article अच्छी. National emergency को article में सब question through देखियो. नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल अच्छी 352 टी का पूर्ण हिंट्स दे दो 352 नेशनल इमरजेंसी 356 होची आपनकर स्टेट इमरजेंसी 360 होची आपनकर फाइनेंशियल इमरजेंसी सो 352 356 360 तीनटा आर्टिकल आपन पढिबा पड़े कवर कले हे जो 352 होची नेशनल इमरजेंसी 356 है आपनकर स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल 360 is your financial emergency. These are three types of emergency. Okay, 352, 356, 360. So let's record it. Who among the following termed 356 as a safety valve? 356 माने कौन? Who among the following termed 356 as a safety valve? 356 माने कौन? President rule, president rule, state rule, state emergency. तो कौन राजेंद्र प्रसाद बी आर अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर इन द कमेंट सेक्शन आंसर दियो गुड मॉर्निंग ईशान आंसर इन द कमेंट सेक्शन हु टर्म्ड 356 as a safety valve voice declaration sir अच्छा now it's coming who termed 356 के रिफ्रेश कर दियो नेटवर्क तो देखो ठीक है आज ए सेफ्टी वेल्व नेटवर्क देखा तुम्हारा आश्चर्य नहीं क्लियर ना ये देखो नहीं तुम देखा तो ठीक बड़ कर दी बड़ कर ठीक है ना वीडियो क्लियर आसुन अफसी तुम देख टिके देखो किए कहते 350 56 को सेफ्टी वेल्व को आंसर you have more questions to solve. Who said this? What is it? किए कहते एटा आंसर क्लियर है ओके who among the following termed 356 as safety valve tell आंसर दे पारिबनी चलो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते 356 को सेफ्टी वेल्व है 356 एज ए सेफ्टी वेल्व प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट फंक्शन कर ठीक से कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस को फॉलो कर स्टेट ब्रेकडाउन है कॉन्स्टिट्यूशनल मेसिनरी ब्रेकडाउन है स्टेट रे सेतेबेले प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर स्टेट रूल और स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल हो कि स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे आर्टिकल 356 रे स्टेट इमरजेंसी जोटा प्रेसिडेंट रूल जोटा सेटा होची 356 सेफ्टी वेल्व के कहते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते 356 इज ए सेफ्टी वेल्व अच्छा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट कोई आंसर दला
आंसर देला किसी नहीं फास्ट क्वेश्चन हो जाउछ एक्सटेंशन फास्ट क्वेश्चन ये गोटे गोटे वर्सन बस एब्सोल्युटली कर तुम ऑप्शन दे दियो एबीसी लिख दियो एब्सोल्युटली करेक्ट जहाँ मु कहली फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट is given in Article 356 if state fails to comply with the constitutional authority, constitutional machinery, constitutional guidelines, constitutional principles, constitutional ethos, then president will declare on the advice of the governor, on the report of the governor, president will declare this state emergency or president rule in the state. So Article 356 absolutely correct. Fine. Okay. So answer होची ये भी है. चलो एक क्वेश्चन इधर आफ्टर व्हिच रिपोर्ट प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट्स प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट आफ्टर व्हिच रिपोर्ट प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट्स प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट दैट इज स्टेट इमरजेंसी कहा रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर गवर्नर कहा रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट विल प्रोमुलगेट प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट आंसर दिस क्वेश्चन whose report president will promulgate president rule in the state answer this prime minister recheck your answer recheck your answer report कहाँ पर on whose report president promulgates president rule in the state recheck your answer rephrase your answer recheck on whose report president promulgates president rule in the state answer D is correct. Now you have rightly said governor. It's not prime minister. Normally we think prime minister advises the president to promulgate president rule in the state. Council of minister advises. एमिति नहीं कहार report पचार on which report. सेट में तो confusion prime minister governor भीतर है. Suddenly तो mind की पड़ा prime minister. Normally जिनसे कहार report पर president can promulgate president rule in the state. Governor's report. You know, governor send every fortnight governor sends report regarding the functionings of the state, and if president satisfies that the ground arises there is a grave or state has failed to comply with the constitutional ethos, constitutional machinery state, there is a breakdown in the constitutional machinery in the state, then president can impose president rule after this report, because governor is an agent of the center and also constitutional head of the state. Governor plays a dual role. So president promulgates president rule in the state, that is governor. Okay. Next question. चलो आ जाओ. तो right. तो भी तमें ठीक कोई जो ईशान. First तमें ये जो लिखते लो क्षेत्रवासी ये लिखियो नहीं. Prime Minister का report रे president emergency declare करिवे नहीं. बुझी पड़छ नहीं. कोई emergency president rule. President rule कथा को अछि वर्तमान. हला. President rule is called state emergency. Okay. So proclamation of emergency by President of India can be made on the written advice of the cabinet only. This provision has been added in which part of the or which this question is very important. You note down this question may be asked in the exam. This was already asked in several exams. It answer the answer. Chapter number follow question number 4. Read question number 4 and options are there. 44th Constitutional Amendment Act, 42nd Amendment Act, Constitutional Assembly in the Constitution of India by Supreme Court of India 1975. See, कौन पूछिए president will declare or can declare emergency only on the written advice of the cabinet, after that advice of the tendered by the cabinet, written advice. This provision was added in which amendment? 42nd, 44 Constitutional Assembly in the Constitution of India, Supreme Court in 1970. Answer this question first. First answer there, so that we will solve other questions. This time is limited in this YouTube session, and I will advise you or recommend you, if you want to access the full course, full coverage of this syllabus course, in detailed discussion of this course, then go to just download Unacademy Learning app and follow me there, and OPSC set the OPSC goal and follow me. After following you can watch free live classes. Then if you are satisfied and motivated, then you can upgrade for plus courses. So when plus courses is very nominal fee, you have to pay, that is subscription fee. So at 7,000 you can access 2 years course, access the course for 2 years, 24 months. So just description box link there is, किसी read नहीं, केमती join करियो, कौन करियो, everything you know. So tell me the answer, otherwise I will be
Okay, answer this C. भैया C नहीं, रिप्लेस करो आंसर. Proclamation of emergency can be made on the written advice of the cabinet. देखो ये जो चीज है इसमें डिस्कशन, इफ आई विल डिस्कस देन इट विल टेक टाइम. 44th अमेंडमेंट एक्ट, आंसर इज 44th. क्षेत्रवासी 44th, ईशान 44th. ओके, रघुनाथ. So 44th Constitutional Amendment Act 1978, right? So what happened actually, this Janata government this time? So actually President was bound by the decision of the Council of Ministers. This was the system during, before this amendment, or Indira Gandhi or Congress era, Indira Gandhi's time. So 42nd made, or President was bound to give his advice. But before this 44th, what happened? How the national emergency was imposed? Only on the advice of the Prime Minister. That is Indira Gandhi's time. Only on the advice of the Prime Minister, not Council of Ministers. Consultation was not there. Concurrence was not there. Discussion with the cabinet was not there. Prime Minister said, President will declare the emergency. What happened in 1975 emergency? So after that, this was felt when Janata government came to the power, that this is not democratic. This is not concurrence. This is where President is not consulting, or cabinet is not consulted. Cabinet is not about only Prime Minister. Prime Minister along with Council of Ministers form cabinet. So they have to take the decision, and that has to be informed orally, not orally. That has to be informed in written. कि हमें written advice दबो, तुम्हें orally कोई दबो नहीं कि President emergency लगाओ. Written, you have to give a written recommendation, advice that this situation has arisen, so that you can impose President rule or national emergency. This provision was added in 44th Constitutional Amendment Act 1978, and understand before that it was only on the advice of Prime Minister. So 1978. Okay, dictatorship type रही जो ना, सिंपल है, Prime Minister को ऐसे आले dictatorship रही जो ना, बुझी पड़ चुने. We have a democracy, consultation, Council of Minister, headed by Prime Minister. Though Prime Minister is a primus inter pares, first among equals, but still he has to take the advice of this Council of Ministers while exercising the functions of the executive, and he has to communicate all the information. Article 78 says that he has to communicate all the decisions of these decisions, or the major, what are the decisions taken by the Council of Ministers, that is communicated to the President, or he communicates to the President. Understood? So next is proclamation of emergency under 352 when Lok Sabha stand dissolved has to be approved by 352 रे जदि लोक सभा डिजल्व हो जाउची ताले ता कोन होबो भैया पढो ऑप्शंस पढो. दिस इज you have to play the game. I will not play the game. I am just a facilitator. Read the options, be the dynamic, start solving the questions. Ultimately you have to play the game. So answer this question be first. Try to answer this question. Try. Those who are appearing the exam, and I will suggest you go to the make it. Yes, okay, answer the question. Proclamation of emergency under Article 352 when Lok Sabha stand dissolved. When Lok Sabha is dissolved, what will happen? In the meantime, Rajya Sabha has to pass that first of all. So though you have not studied the theoretical part, I am telling you all these things are discussed in plus courses or in the courses of Unacademy app रे आपण सब कोर्स देखि परिबे. कारण 80 to 20 minute session रे टोटल कोर्स को कंप्लीट करि परिबे ना. It's quite impossible. So I am just giving you some important questions, and through that discussing some aspects that will help you. Okay. So okay, Rajya Sabha can pass, and there is another provision after the reconstitution of the Lok Sabha. It has to approve or pass this bill, that provisions of emergency within 30 days of its first sitting. First, if Lok Sabha stands dissolved, then Lok Sabha is dissolved, then Rajya Sabha will pass this emergency. Then after that, when Lok Sabha reassembles, it has to approve the same within 30 days of its first sitting. So answer is A. Absolutely fine, Susmita. So simple answer देले ही तमें जो मन आंसर दे भाई भूल हो कि ठीक हो आंसर दे दियो. माइंड रे चिंता को ओपननेस रहो और थिंक करो, ब्रेनस्टॉर्म करो. इट इज नॉट अबाउट डॉगमेटिक डे इन ए वे आउ को पेपर गोटे थान डॉर्मेंट लिसनर्स सुनिबे खाली चाल नो you should be active participant. Take interest. All things, everything depends on you. You are the player. I told.
how will play. If you know the techniques of the game, you can play better than others. So techniques janatu, strategy janatu, smart approach follow करंतु. 30 days of its was sitting. Okay, hard work करी घोषिबार नहीं किछि नहीं, simple case. भैया लोकसभा डिजल होइछि, राज्यसभा रहिबो 30 days भितर लोकसभा दल बसिबो, 30 days भितर पास करिवो. आउ maximum gap between two sessions is 6 months. हमर total session के maximum gap between two sessions 6 months, maximum 6 months gap हि पारे. दुईटा सेशन गोटे सेशन तापर 6 मास पर गोटे मैक्सिमम ता पूर्व भी पारे ता माने कोन हो ठीक. तो 6 मंथ भीतर आमे जेतबे आसीबो कि लोकसभा पुणी नुआ रीअसेंबल सब, तो सेतबे 30 डेज भीतर ता पास करिया पड़ो. ओके, राज्यसभा ता भीतर पास करि सारितिबो 3052 अनुसार हैला. एटा विदिन 30 डेज आगुर थिला 2 मंथ्स, आगुर थिला 2 मंथ्स, ताको 44 चेंज करिकु 1 मंथ कराइछि. माने त नेशनल इमरजेंसी पास होता 2 मास भीतर पास करतले, पार्लियामेंट पास करतला. तो सेटा 1 मंथ हे गेला. 44 पर बहुत कि चेंजेस हेछि, कारण 44 बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का माने प्रेसिडेंट को अधिक पावर देछि 44. तो व्हेन वाज द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. आर्म्ड रिबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्म्ड रिबेलियन केबे आडेला? आर्म्ड रिबेलियन, प्लीज टेल मी, आर्म्ड रिबेलियन केबे आडेला? देखो, आर्म्ड रिबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा इंटरनल डिस्टर्बेंस थिला ताको रिप्लेस कला आर्म्ड रिबेलियन. एटा को अमेंडमेंट हला? फास्टर पास आंसर दियो, जल्दी जल्दी आंसर दियो, टाइम इज लिमिटेड, जल्दी जल्दी आंसर दियो. हां, आंसर गुड. ए ना, नहीं आंसर दियो. तो ट्राई करो भैया, ट्राई करो. 44 नहीं, 42 नहीं, 42 नहीं, 42 नहीं. आउ तरे आर्म्ड रिबेलियन केबे आडेला नेशनल इमरजेंसी? 42 नहीं, एटा त आगुर थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस. आर्म्ड रिबेलियन आडेला 44 रे, 44 रे, 44 से 44 रे बहुत सारा चेंजेस है. जनता गवर्नमेंट टाइम रे बहुत सारा चेंजेस है, बुझ पड़छ नहीं. तो 44 ए आंसर विद्युत प्रवाह एब्सोल्युटली करेक्ट. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हला 1978 जहां भी आर्ट कथा पचारे जदी भी मैक्सिमम चेंजेस इज 44th. गुड. Which of the following fundamentally don't get abolished automatically during national emergency? When national emergency लगी ची कोर्ट automatically abolish हो नहीं. 19, 20, 21 both है B and C. देखो आंसर देखो, 7 नंबर क्वेश्चन वेरी इजी. आंसर फर्स्ट. चिंता करो, आंसर दियो. आई एम जस्ट ए फैसिलिटेटर. आई एम नॉट मु पढ़ी भी माने मु पुनी बुझिबिला कोन. आई हैव टू शो यू द क्वेश्चंस एंड यू सॉल्व. एनी डाउट यू कैन गेट बैक टू. सो टेल रघुनाथ. विद्युत प्रभा, yes. Rasmita, D absolutely correct Rasmita. So try is first attempt नहीं हो, बहुत बढ़िया कथा. B and C माने 20 और 21 को छाड़ देला पर ऑटोमेटिकली सब abolish हो जिवो. 19 तो ऑटोमेटिकली गेट abolish. आर्टिकल 358. तो 359 रे कोन प्रेसिडेंट को सस्पेंड करि परिबो अदर आर्टिकल्स को, किंतु माने प्रेसिडेंट कैन प्रिवेंट और सस्पेंड द राइट दैट enforcement of fundamental rights. You cannot go to the court for enforcement of fundamental rights, but except 2021, because right to life is not suspended, there is still you enjoy this right to life. Okay, so to accept article 2021 you can, article 19 get automatically suspended. That is 358, 359 theta. What 358 automatically habo, 359 de president karibe. Good, is that fine? Okay, वे समझ में आ रही है कि नहीं कुछ? Are you getting? बुझी पाउछन्ते आपण माने? Is that clear? बहुत कम समय रे जति की information, and that's all important questions. Next, which of the following constitutional amendments equip president to impose national emergency on any particular part of India? को amendment रे national emergency को any particular part, whole or any particular part of India रे आपण impose करि परिबो. whole territory or any particular part, any district रे पारे national emergency. तो भाव national emergency माने पूरा pan India emergency अछि. ए पारे को district रे national emergency declare हे पारे. Any particular part of India or whole country? Answer this question first. 8, question number 8. Time संगे संग को next question पढ़ेबी. तो आंसर देखो बहुत सहज अछि. ऑप्शंस 38, 40, 42, 62. 38, 40, 42, 62. बताओ सी एब्सोल्युटली करेक्ट इसान. 42 देखो ट्राई करूछ भलो होछि. ट्राई न कले बुझबा चेष्टा करो, चिंता करो. 42 यस 42 रे कहले कि एनी पार्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया. चलो, नेशनल इमरजेंसी अंडर व्हिच आर्टिकल? ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा था. इनफैक्ट नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल डिक्लेयर है. आंसर दो. एटा बहुत सहज. रघुनाथ आंसर दियो. नेशनल इमरजेंसी को पार्ट रे डिक्लेयर है. आंसर
अब जदि क्लास देखा 7:30 रे जो क्लास मोर सब रोनी यूट्यूब केतबे रोची अल्टरनेटिव डे रे तो ताको देखि नब 360 रे भैया नेशनल यूनिवर्सिटी 360 रघुनाथ रिफ्रेज योर आंसर रीचेक रीथिंक नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल अच्छी ईशान आंसर दियो रश्मिता सुस्मिता आंसर दियो सुस्मिता नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल अच्छी जस्ट द डायरेक्ट क्वेश्चन एट तो किसी भाबियार नहीं चिंता ए नुहे ए सडनली कहदे तीन टा आर्टिकल 358 कोड 358 कौन सस्पेंड हवा ग्राउंड ना नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल अच्छी 352 356 तीन टा आर्टिकल कही ना 352 है नेशनल इमरजेंसी हम ना नहीं 20 रघुनाथ ए ठीक कल फास्ट कहीं भूल आंसर दूस तुम तरतरी आंसर चिंता करी गोटे आंसर दब 352 नेशनल इमरजेंसी 356 है स्टेट इमरजेंसी 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी तीन टा इमरजेंसी अच्छी तीन टा आर्टिकल मन रखिपर तीन टा आर्टिकल एटलिस्ट मन रख क्वेश्चन एग्जाम टाइम रे तुम फेस कर क्वेश्चन कन्फ्यूज हो 350 58 59 सब अलग 360 होची फाइनेंशियल इमरजेंसी 352 होची नेशनल इमरजेंसी बुझिपाइलो भूल कहीं करथले ए नो सुस्मिता इट्स नॉट ए सुस्मिता इट्स नॉट ए ओके इट्स नॉट सी इट्स नॉट डी बी है आंसर बी माने कौन 352 बी लिखा है कौन 352 होची नेशनल इमरजेंसी हला अच्छा इमरजेंसी प्रोविजन को कंट्री आछि बरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री जर्मनी यूएसएसआर यूएस यूके आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट 10 नंबर बुझ ट्राई टू अंडरस्टैंड 10टी क्वेश्चन जते डेली भी सॉल्व करू दैट्स मैटर दैट इज मोर एक्चुअली इन फैक्ट beneficial for you okay so what is which country we managed emergency provision is brought from which country D UK रो आंसर नहीं आउट द आंसर UK रो आसी किछि इमरजेंसी प्रोविजन देखो जर्मनी वीमार कॉन्स्टिट्यूशन रो इमरजेंसी प्रोविजन बरो करचंती जर्मनी माने तो बी नो यूएसएसआर भी नो यूएसएसआर आसी कोन यूएसएसआर कोन आसी यूएसएसआर कोन आसी यदि यूएसएसआर कोन आसी जर्मनी कोन आसी फंडामेंटल ना सरी इमरजेंसी प्रोविजंस हला इमरजेंसी प्रोविजन आसी जर्मनी रो ओके जर्मनी से नहीं जर्मनी हो President can proclaim a state of financial emergency under which article 350 emergency provision okay President can proclaim a state financial emergency को article is financial emergency को article है आंसर এটা তো बहुत सहज होची which article yes 360 absolutely correct बोली 360 अच्छा लास्ट क्वेश्चन 365 lends legitimacy for the president rule in a state under which of the following circumstances 365 पूछ देखो state governor report finding providing the evidence of administrative failure in the state chief secretary report providing evidence of constitutional machinery in the state president taking cognizance of administrative failure in the state when state fails to comply with or give effect to any direction from the center answer the question da abcd chapter eta tama ठीक सी नुहे रघुनाथ सी कोटा कथा कहूछ 12 नंबर ने 11 नंबर 11 नंबर तो हवनी सी 12 नंबर आंसर कौन सी कहूछ प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन टेकिंग रिकॉग्निजेंस प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन नहीं देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कथा 356 रो ग्राउंड हला देटा 356 रो ग्राउंड इटसेल्फ ला 356 गोटे और 365 गोटे 356 हला constitutional machinery breakdown of constitutional machinery in the state 365 कौन हबो 365 हो जतबे स्टेट फेल करिवो इन डायरेक्शन सेंटर डायरेक्शन ना नहीं ए नु ए जो तुम कोन स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट पढ़ी बट एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फर्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर सेटा नु एटा वाज डी आंसर हो 365 कथा कुजी 356 रे गवर्नर का रिपोर्ट रे यदि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुए सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ला 356 रे आउ गोटे रीजन अछि माने आउ गोटे कॉज जीएस विद्युत प्रवाह करेक्ट जितेबाला स्टेट गुड सेंटर डायरेक्टिव्स दब स्टेट को सब करिया पई एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव मन करो कोरोना टाइम रे सेंटर किसी इंस्ट्रक्शन देला स्टेट फॉलो करू नाही इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर
the state सेंटर आसतो डायरेक्टिव्स ऊपर किसी एक्शन होनी बा कंप्लाई करूनी बा फॉलो करू नहीं सेते बेले भी गोटे नेशनल इमरजेंसी लागि पारे सॉरी स्टेट इमरजेंसी लागि पारे सेते बेले भी स्टेट इमरजेंसी लागिबो स्टेट जदि फेल हबो सेंटर डायरेक्टिव्स को कंप्लाई करिया पाई और सेंट्रल डायरेक्टिव्स रो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करू नहीं सेते बेले भी 356 लागिबो भैया 365 इज द cause or is one of the factor or is a reason for 356 imposing of 356 तो बुझी पाइलो द डीएल आंसर 12 नंबर आंसर डी तो टाइम तो हो जाइछि so I will close the session here but I will recommend you if you want to access the full course along with all the important questions test documents PDFs study material everything is accessible everything is there on Unacademy app just download Unacademy app free class प्रथम देखो free class special class app download करिया पय description box रे link दे जाइछि फ्री कोर्स आगे देखंतु तापरे प्लस को जॉइन करंतु प्लस जॉइन करे 5,000 भीतर मैटर सो इट विल नॉट कॉस्ट यू अ लॉट डोंट थिंक अ लॉट स्टार्ट लर्निंग एंड टाइम इज वेरी हाई इट्स वेरी हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टू ऑगमेंट योर प्रिपरेशन ओके एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज यू कैन गेट बैक टू मी you can ask your always your queries are solicited you are highly appreciated so thank you to watch me stay tuned to all the videos like comment share and subscribe for further updates okay thank you thanks a lot